Panama, बीस मिनट था के खुशक मसाला जरा बनाया ना दे हल्का हल्का तूर देना फिश के ऊपर ठीक है जा हाथ ना ला देना मा ऐंडा करके ना हाथ ना ला देना मसाला अंदर तक जाना चाहिए फिश नो सी ज़्यादा सेकते नहीं रखना ताकि फिश जरी ना ऊपर ऊपर जल ना जावे दे हल्का हल्का सेक देना मतलब फिश अंदर तक बन जाएगी पक जाएगी ठीक है und नमस्कार कैसे हो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो गए और खैर खैरियत से हो गए तो आज सब चैनल में लेके आवा ग्रिल फिश की रेसिपी यानी कि गश्बरोनिया कोले होते आहा मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह नाल एंजॉय करेंगे आग से करेंगे तो नाल फिश बनावांगे तो मज़ा भी आएगा नाल दलमता भी करेंगे तो देना इंशाल्लाह ते स्टार्ट करिए एडी सब तो पहले से मैरिनेशन तैयार करनी है फिर उसे फिश नु धोना मा ते स्पेशल tips dan dasniya पहले नंबर ते जो से शुरू करनी है फिश नो और टिप्स दसांगे इंशाल्लाह याद रखोगे ते हम देख लिए ग्रिल्ड फिश रेडी किदा करनी है नो मैरिनेट किस तरह करना मा नो कोले तक किदा बनाना मा आइए देखिए फटाफट फ्लो फिश की रेसिपी इंशाल्लाह रेडी करनी है हम सब तो पहले ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਧੋ ਲੈਣਾ ਵਾ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਰਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਟਿਪਸ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਪਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਕਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਾ ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਟਰ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ नमक ऐड कर देना जी 1 चम्मच अजवैन ऐड करनी अजवैन इन थोड़ा थोड़ा दरदरा जा पीस लेना अजवैन ताकि अच्छे तरीके ना जा हथाना मसाला ना मसल तो बाद ऐड करना पानी के अंदर 1 चम्मच जेरा ऐड करना मा पेस्ट लहसुन दा 1 चम्मच ऐड कर देना नी ये तरीके ना मिक्स कर लेना पानी के अंदर जेरा अजवैन वगैरह नमक की था वो मिक्स करके फिर असी तो लेना फिश हीगा फिश का एक पीस चुकना बोल के अंदर मतलब के फिश बुगो देना सीगा देखो ही लग जाएगा ना पानी फिर उसी पानी उठोनी पावाना फिश ताज़ा लेनी जिसों में लेनी है ताज़ा लेनी है फिर फिश का ज़ायका ज़्यादा हुंदा वा है नहीं भी और अड्डे वाले को या रेडी वाले को फिश ताज़ा ना हो तो टेस्ट में नहीं आएगा इस चीज़ का खास ख्याल रखना फिर उसी पानी ऐड कर देना बीफ में तो सीधा सेनिया उस तो बाद असी नु खा लेना बार खुशक खा लेना धोना नहींगा खुशक खा लेना मा खुशक खान तो बाद नु मैरिनेशन करना मा किस तरह करना मा केड़े मसाले चाहिए ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਇਵਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜਨਾ ਵਾ ਖਬਾਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕੋ ਮਲ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਸਕੇ अच्छा तरीके ना फिश नो खुशक करना वा फिर असी मसाले वगैरह जेह्ड़े लाने आ फिर लावांगे इन्नू मजीद अच्छे तरीके ना खुशक हो जाएगी ना इन्नू तकरीबन 15-20 मिनट लग ही जाने खुशक होन ते फिर एह्दा प्रोसेस करदे हैं ठीक है पानी खुशक हो गया फिश दा हुन एह्दे वास्ते मैरिनेशन तैयार करनी है रेडी करनी है ते मसाला जत ले आंदे आ हुन रेडी कर लिया मसाले मिक्स करके फिर असी मसाला मच्छी नू लावांगे हुन फटाफट मिक्स मसाला कर लिए एक बोल डाला नमक खुशक बोल लाके और विच 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देनी जी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देनी जी चम्मच लाहा काली मिर्च पाउडर ऐड कर देनी हाफ चम्मच
Garam Masala Powder add कर देना कर दाजरा पीसा होया 1 चम्मच नमक दा नमक ज़्यादा तेज़ ना रखियो आमी तेज़ हुए फिर दिल्ली का दखानो Ajvin add करनिया 1 teaspoon अजवाइन लेनिया और मसल के ओदा असर कर लेना मसली यानी द ऐड करिया Fish Marinate daba tir pela packer tir pela masala na pishda national da yashanda oer kaldenaji Chetri kena mix kalena sarim sale kushigmu Masala mix ho gaya chetri kena up यहाँ सब तो पहले ट्रे होएगा खुला बर्तन होएगा ना इजीली कम हो जाएगा तो एक पीस उठाना मा पीस में उठा के खुशक मसाला जरा बनाया ना दे हल्का हल्का तूर देना फिश के ऊपर ठीक है जा हाथ ना ला लेना मा एंडंगर के ना हाथ ना ला लेना खुशक मसाला इस तरह ला देना सारी लेकिन दफा Hadi cheese dite na cheese dite ya. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ तरह सारे पीस रेडी कर लेने हैं फिर अगला प्रोसेस करना है एक स्टेप रह गया वा ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ 2 ਚਮਚ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਐਪਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਬਚਾ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਬੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਚਮਚੀਆਂ ਦਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ 3-4 ਚਮਚੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਕਰ ਲਈਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਈਓ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲੇਪ ਕਰਨੀ ਆ ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਆ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਲਾਤਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਆ ਮਸਾਲਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਦਹੀਂ ਸ਼ਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ 4-5 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆ हमें लोग का इन्ना टेस्ट तक बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ते आस्ते नींबू रह गया नींबू असी ऊपर लाना हल्का हल्का छिड़क देना नींबू नु इस तरह करके और नींबू ले लेना ठीक है
सारी फिश तला ना अमदा पक नींबू का भी असर हो जावे नींबू शिमू लालेवा होना से फिश नो का नाम मैरिनेट कितनी देर करना मा इनो तकरीबन 2 to 3 घंटे कर लो बेहतर होंदा अगर तादेखो ज़्यादा टाइम ज़्यादा समय इनो ओवरनाइट करना तो सब तो अच्छा बेहतरीन वाली काम ते इनो तकरीबन मैं जरा रखनो 4 to 5 घंटे रेस्टोरेंट के अंदर क्यों इन्हें टेस्ट होंदी चीज़ा esto ayatonde upele onane marination karikira kihandia eston farafarta. Taste zyada ayanda te hon jata panjikende tano meldea zyada atnura ke subano si grill karange to meldea tano banya sampakente amal. Even marinate hovia aino tino grill ka na fish no te kol ke parabara grill ka liye the pro lidia andara sit kolev gara chilagara le sek zyada ni dena Bisari na jawayo ko pronunciada koreni seg ni rakne. Pika inu kolige. Tapla paze edo prasi lonama dera mixer bonama na. O lonama. O balakara banayaba edo chagia mayonnaise, oil, de lemon. E halka dera na spice ganagadiri fish hadidiri na aloy do pura jumura na jabe. Esa halka. This yeah. Fish no lagata e non asin of karlanama. As lag yahuna lag no of kadena. Fish no asi zyada sek the nira kanata ge fish jerina upropra jalna jabe. De halka sek denama the fish under tako banjegi pakajegi tika. Antagriban eno Punjabi mitalagnaya dona sanato do charmit ekvar sek dena fir oilona halka zyada ail nilona. O sabada la process gabdina fir kamange fir process ki kadna. Halka illa denama doten mint the bar aista. The burishna pladen aistan tika. Dusi sair tami alla kete dusi sair kardenia tika palato denia. Bakshi mana Golejana bilkul saloriknia taki asasta pakjegi fish. Fish yeri ready hovia on fish no seeing ekabertan dender kaldanama fish jolly dendro kadlani tika. And mashallah zabaldastri kena golden color biagiaba. Zabaldastri kena Bakeye, Sig Zada Nidakana, Fish Detale, Sega Kongeda Upron, Zada Jaldegi. Bana Tapa Bizata. That won't be sad that we I got me a bunky. Shish grill ready, Hovia Zabadastanikana Bangia tail, Dressibino Lazimitraikana. Step by step, video then that the Seba Salevi comes the other Aksagdea Lalamich we got a spicy the kisi, es video then the Te Torigi Lalamich Kuti Hui Torigi Powder Kamaraksa de spicy ni hoegi. The spicy Hove Fairy Mazam Davatundu the roti Hove. I hai mazai and inshallah te hona the Nibuna Chodange Jaram Masala Powder Kang at the Feda Sirotina Kamage Dana Lav mi Hona Chaida. Japadine Chatni Honi Chaidi. Muntaha next recipe under Allah Hafiz.